अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। नाज़रीन, आज हम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर के हॉल नंबर 2 में मौजूद हैं और यहाँ पे पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के इश्तराक से एक कल्चरल म्यूज़िक फ़ेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। हमने सोचा कि अपने नाज़रीन को भी इस म्यूज़िक के फ़ेस्टिवल के कुछ झलकियाँ दिखाई जाएँ, तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं है नाउम्मीद इकबाल, नहीं है नाउम्मीद अपनी कश्ते वीरां से, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरां से। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। हज़रात मोहतरम, मेरे दूर नज़दीक से आए हुए तमाम ख़वातीन व हज़रात को रंग स्कूल ऑफ आर्ट्स की तरफ से खुशामदीद। आप लोगों का आना और हमारे लिए ये प्रोग्राम करना इतना ही कठिन था कि जैसे इंसान एक दूसरे को जानता भी ना हो और फलक से हाथ लगाने की ख्वाहिश रखता हो। इस प्रोग्राम में हमारे साथ जिन साहब ने ताउन किया उनका मैं मशकूर, उनका भी जिक्र करूँगा, लेकिन रंग स्कूल ऑफ आर्ट्स के रूह रवां जनाब वजी निज़ामी साहब और उनकी टीम और पैशन आर्ट एजेंसी, जिनके यहाँ हफीज़ साहब तशरीफ़ रखते हैं, मैडम जैनी, और स्विस आर्टिस्टों का बहुत मशकूर व ममनून हो कि उन्होंने यहाँ आकर हमें जो पजीराई दिलवाई। और ये याद रखिए, मौसीकी का एहतमाम या उसकी कोई ज़ुबान नहीं हुआ करती, ये फीलिंग्स पूरी दुनिया में एक ही तरह महसूस की जाती हैं। रंग स्कूल इस्लामाबाद में एक छोटा सा आर्ट का, फाइन आर्ट का, जिसमें welcome our artists. Sumair Emanuel is a renowned drummer and percussionist who began his musical journey in 2009 and started learning basics from music academies and various artists in Pakistan. He started performing as a professional drummer in 2017 across the country along with various bands and artists and proved his virtuosity as a professional drummer. Please welcome to the stage our talented drummer who is about to bring the beat to life. A good big round of applause for Emmanuel, please. Our next artist is Irfan Khan. Irfan is one of the finest contemporary professional tabla players who is playing since the age of 7, under the guidance of his father, and later took training from different ustads. Irfan Khan has performed on national and international stages in the US, Singapore, Oman and Russia, mesmerizing audiences with his rhythmic patterns on tabla. Whether playing solo or with an ensemble, Irfan Khan creates a pulsating rhythm that will leave you spellbound. So get ready to tap your feet and feel the rhythm. Ladies and gentlemen, Irfan Khan. Ladies and gentlemen, now it's time to welcome one of our Swiss friends. Please welcome to the stage the virtuoso who has captivated audience around the world with his exceptional talent and skill on the guitar. Loris Peloso studied music at the Swiss Jazz School and Conservatory of Bern Pedagogic, where he learned jazz guitar compositions and arrangements. He has served as a teacher at the Jazz School in Basel, Switzerland. He has worked as a session musician for the string record People.
He has been the sideman for Mark Hauser in different projects, whether it's finger-picking an acoustic melody, shredding an electric solo, or strumming a lively rhythm. This guitarist knows how to bring the heat and get the crowd moving. Ladies and gentlemen, put your hands together for Lourdes Perezo. Now I'm going to invite one of the most talented saxophonists of Switzerland. Marcus Hauser has been mesmerizing audience with his smooth and soulful playing for almost 2 decades. With a deep appreciation for jazz and a versatile approach to music, Marcus has established himself as one of the leading names amongst the Swiss saxophone performers. Mark has also played with the American pop star Alicia Keys. So put your hands together for Marcus Hauser. Last but not the least, ladies and gentlemen, it is my honor to introduce to you one of the finest sitar players of our time. Wajid Nizami is a master of the sitar, a traditional musical instrument of Indian subcontinent, and has been captivating audiences with his virtuosic and soulful performances for past 17 years. Wajid Nizami has a deep-rooted connection with the classical musical tradition and blends it with the contemporary musical influences to create unique and mesmerizing melodies. His music also reflects the eternal essence of sitar and has been groomed in a musical atmosphere since his childhood. He upholds the tradition of sitar playing handed down to him through 18 generations of dedication and devotion to music. Ladies and gentlemen, Wajid Nizami. Ladies and gentlemen, I would request you to rise for the national anthem of Pakistan and then Swiss national anthem. Please. Thank you very much.
मौसीकी रूह की ग़िज़ा है और पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड के इश्तराक से ये जो म्यूज़िक फ़ेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, यकीनन इसने आपकी रूह को भी बहुत ज़्यादा सुकून दिया होगा। आपको ये म्यूज़िक प्रोग्राम कैसा लगा, इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा दीजिएगा। सादिया खालिद को आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।